All of you are staying in PGs, right? Anyone from Delhi? So you're from Delhi only? So you're coming all the way from home? Where do you stay? उत्तम नगर से आते हैं, ठीक है. So most of the students who are staying in PG, you know very well that every month you have to speak to landlord for one or the other reason. Okay. Landlord जो होता है, what will he do? He will, according to his wish, according to his will, increase the rent. सही बात है ना? He will increase the rent. And by chance, if you are not able to pay the increased rent, he will evict you. Is this crime? नहीं है crime नहीं है? नहीं, ये तो अब छोड़ दो यार. ये सब नहीं चलेगा, ये अनएथिकल, ये सब क्राइम है कि नहीं, ये बताओ. नहीं है ना क्राइम? ठीक. मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि भाई लैंडलॉर्ड जो होते हैं हमारे प्यारे प्यारे, ठीक है, ये जो पीजी वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, when landlord evict students, in case students are not able to pay higher rent, this is not seen as crime. It is not seen as crime. It is seen as business. By chance, if the evicted student goes to police station, सर मेरे को निकाल दिया इन्होंने, ये आदमी वो जा रहा है, उसने निकाला है मेरे को, पुलिस बोलेगा बेटा दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट क्राइम. आप कंफ्यूज हो गए बिजनेस और क्राइम के बीच में. आप कंफ्यूज नहीं हुए थे, आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट बन गए थे उस टाइम. एक्चुअली बात यह है कि व्हाट वी थिंक इज क्राइम, व्हाट वी थिंक इज नॉट क्राइम, इज ऑल सोशली कंस्ट्रक्टेड. Nothing, there is nothing natural about a crime to be called as crime. We actually categorize few things as crime and we don't categorize other things as crime. So landlord evicted you is not crime, but you not paying higher rent is crime. Let me give you one more example first. Suppose a man marries a woman. Is this crime? नहीं, इसमें तो क्या क्राइम है? Not a crime. Second question. Man marries two women. Is this crime? अब देखो दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं. अब आप समझ रहे हो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा था. क्राइम क्या होता है क्या नहीं होता है, इसमें देयर इज नथिंग नेचुरल अबाउट इट. वी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस डिसाइड what is crime, what is not crime. Man marrying two women is not crime if man is Muslim, but man marrying two women is crime if man is from other religion. Okay, but the same Hindu, if he marries two women in Goa, it is not crime. अब आप समझ रहे हो कि नहीं? अगर गोवा में वही हिंदू जब दो लड़कियों से शादी करेगा, इट इज नॉट क्राइम. दैट मीन्स पॉलीगैमी इन हिंदुइज्म इज क्राइम, बट इफ पॉलीगैमी इज डन इन गोवा, इट इज नॉट क्राइम. इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नथिंग नेचुरल अबाउट क्राइम. सब कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है. वी आर डिसाइडिंग कब क्राइम क्या है, क्योंकि नहीं, ऐसा कुछ कुछ उसके अंदर नेचुरल अपने आप में है नहीं. हम कर रहे हैं डिसाइड ये सब. ओके, इसका मतलब क्या है कि सोशियोलॉजी विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमारे समाज में कितने सारे गैप्स हैं, लूप होल्स हैं.
And how conveniently we decide to put labels on few things. Understanding my point? Okay. Acha. I'll ask you very basic question. One thing that we have understood so far is that sociology helps us question the, what should I say? कॉमन सेंस बोल सकता हूं? ये वर्ड यूज कर सकता हूं क्या अभी? कैन आई यूज दिस वर्ड? What we usually think in common sense. Sociology is questioning that. In common sense, we think like this, na, that businessman has made this much money, so that businessman is a good businessman because he has made money for himself and he has paid workers also. But sociologists, some of the sociologists say, no, he's a bad person because he has stolen the money which was actually deserving to those workers. Okay, so now we will actually understand those debates also, but the one thing that is coming out from our discussion so far is that sociology is helping us question the common sense. मतलब जो भी हम चीजों को for granted लेते हैं or taken for granted, okay, and is it only questioning us or is it also giving solutions? Well, answer is very simple. Solution is something that sociologists leave to the members of society. Okay, sociologists will only discuss or point out discrepancies or inconsistencies. Like I talked about one inconsistency. This is crime in this situation, but in the same situation done by some other, it is not crime. Sociologists will say, is this not inconsistent? Let me give you one more example. If I murdered a person, killed him, am I criminal? Yes? Right? इसमें तो कोई शक नहीं है. I am criminal. But if I was wearing Indian Army uniform and the person who I killed was Pakistani soldier, am I criminal? But why? I have murdered person. Why I am not criminal? Okay. So that means if I was civilian and if I had killed someone because he was threat to my family, then I would not be criminal. If I was civilian, then तो I was criminal. आप समझ रहे हो ना मेरा सवाल का मतलब क्या है? ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ ये मैं कर क्या रहा हूँ? आप समझ रहे हो इसका मतलब? If I am Indian Army soldier and if I killed Pakistani Army soldier, I am not criminal, I am hero. Okay. But if I am a person in my house, staying with my family, someone has come, did some badtamizi or tried to steal something, and if I killed him, then I am criminal. Okay. At least if I am not convicted as criminal, at least I will be accused as criminal. But the soldier will not be even accused as criminal. Okay. So what does it mean that we are choosing what is crime, what is not crime? There is nothing natural about the act. One more question. Bhagat Singh was terrorist or freedom fighter? Freedom fighter? But when you read history, why is his name written as revolutionary terrorist? ब्रिटिशर्स के हिसाब से था टेररिस्ट वो. फ्रीडम फाइटर भी तो आपके हिसाब से ही है फिर. अब आप समझे कि नहीं समझे मेरा सवाल का मतलब? अगर he was terrorist according to Britishers,
then he was freedom fighters according to us. तो अगर सब according to ही चलना है तो what is reality then if everything is according to someone? This shows reality is multidimensional. Who is terrorist to you is someone else's freedom fighter, and who is freedom fighter to you is someone else's terrorist. That means there is no person who can be called as complete freedom fighter. Hamas बोलेंगे ना उसको, हमस तो नहीं बोलेंगे. हमस वो लेबनीज जो खाना आता है सॉस, वो याद आ गया. हमास जो है, हमास, are they terrorists or freedom fighter? Terrorist. But the people of Palestine are calling them freedom fighter. Are the people of Palestine wrong? Yes. इतना आसान है सब कुछ लाइफ में. For them they are right. अच्छा, is Israeli Defense Force freedom fighter or are they terrorist? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंडिया से बाहर लेके जा रहा हूं आपको, ताकि मैं देखूं आपका लॉजिक हर जगह सेम लग रहा है, फिर इनकंसिस्टेंसी उधर. बताओ मुझे, is Israel Defense Forces killing people of Palestine, is it act of terrorism or is it act of freedom fight? Act of terrorism, right? But are they called terrorist? No. आप समझ रहे हो ना मेरे सवालों का मतलब? आप समझ रहे हो कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेबल्स यूज करते हैं. There is nothing natural about the act. We are defining things as crime, not crime, legal, ethical, unethical, not legal. ये सब हम खुद कर रहे हैं. There is nothing natural about the act. And sociologist is a person who lives in Mars. वो मार्स में रहता है. Sociologist does not stay on Earth. He does not live on Earth. He is not familiar with what the members of Earth speak or say or do. And that is why he gets surprised. He has ability to look at the given things from an outsider perspective. Are you getting my point? That sociologist is one of us, but he will show to us mirror that where are we going wrong? How are we choosing labels? How are we defining things? Okay, fine. So that means this thing you have briefly understood. Okay, I'm just giving you a brief orientation on the subject today. Okay, that sociology is questioning the common sense. Fine. I'll ask you one more question, but before that, I will also write one more point that sociology helps us deal with. Sociology can find similarity between comparatively different institutions. Second point, sociology can help us find similarity between comparatively different institutions. अब इसका मतलब क्या होता है समझ लेते हैं. I'll ask you very basic question. Do you know what is caste? Caste. Briefly you know what is caste, right? Do you also know what is race? Briefly, without reading in details about these things, briefly we know what is caste and race. Okay. Are the two things different or similar? Different. First,
साइट पे प्राइमा फेसी, ये तो अलग चीजें हैं, बट मैंने यहां क्या लिखा है, सोशियोलॉजी कैन फाइंड similarities between comparatively different institutions. I am saying that both are same. Now question is how? कैसे देख लेते हैं कैसे. Imagine example, there is a black man, and then there is white man. Fine. I observed from outside that white men are not sitting with black men in the university. They are not dining with black men. They are not marrying black people. They are also discriminating against black people. And they are calling black as criminals. This is something which I observed in USA. That white people are calling blacks as criminal. When any crime happens, the first finger which they will point out to would be the black man. Okay. Second, I observed they are not marrying black men or black. Why would man marrying black men also? मेरे कहने का मतलब है कि whites are not marrying black. Okay. Not dining with them. Now see the second example. Imagine white man is Brahmin and black man is Dalit. He is not marrying them. Okay. Not dining with them. And he is not even having interaction with them, maintaining distance from them. And at the same time, they are also labeling them with different tags like criminal or polluted, untouchable. Did you find any difference between the two statements which I told you? मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा. Now you tell me, how are both different? This is a question for you guys now. Because I am a person from Mars. I am not able to understand how both are different. In caste, Dalit may be fair in skin. Yeah, maybe that is geography. Yeah, so that means the only difference between the two is color. Huh? Money. ऐसे कैसे ये क्या कोरिलेशन हुआ? बट इंटरेस्टिंग है ये, मतलब एज अ पर्सन फ्रॉम मार्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग है ये. नो, बट द क्वेश्चन वाज नेवर अबाउट व्हिच इज इन द टेक्स्ट बुक एंड व्हिच इज नॉट. द क्वेश्चन वाज, is there any difference between the two in practice? I don't find any. I think Acha, let me rephrase my question like this. Is there any difference between casteism and racism? Is there any difference between casteism and racism? अब बताओ. Occupation is very much visible even among races. Each race is ascribed a specific kind of occupation in USA. You would find people from Sikh community, people from black community, people from Mexican community doing different kind of occupations. White men engaged in different occupations altogether. आप देखो, आप जब जाओगे यूएसए में तो आपको दिखेगा most of the Sikh people you would find are engaged in two things. Okay, either they are
driving Uber. Okay, most of the Uber drivers are Sikhs in USA. Or they are owning gas station. Gas station मतलब petrol pump जिसे हम कहते हैं. And max to max which they are doing, third thing, is that they are owning a restaurant. Occupations are fixed. You would not find a Sikh businessman in USA. Okay. As a race, you would find very few people from Sikh community in higher positions. Most of them are found in specific kind of occupations. Same is the case with blacks. Okay. Now, I am saying what white man does to black man, that Brahmin is doing to Dalit, and therefore I don't find difference between white man and Brahmin. I am looking at it as a CSAT question. You are looking at it as a member of earth. Okay. What white man, have you read syllogisms? What A is to B, that C is to D. Okay. So I am saying what white is to black, that Brahmin is to Dalit. That therefore race and caste are not different, rather race is nothing but colored caste. रेस कुछ भी नहीं, सिर्फ कास्ट में कलर डाल दो, वो है रेस. अच्छा ये बताओ, एंडोगैमी, डू यू नो व्हाट इज एंडोगैमी? ब्राह्मण मैरिंग ब्राह्मण, एंडोगैमी. डू यू सी एंडोगैमी इन रेस? White marries white, black marries black. You are Brahmin by birth, you are Dalit by birth, you are white by birth, you are black by birth. Any difference? No difference. कोई difference नहीं. Brahmins are seen in specific kind of occupations. Dalits are seen in specific kind of occupations. Similarly, white and blacks are seen in specific kind of occupation. Any difference? Any difference? No difference. Brahmins call Dalit untouchable, impure. White also called black impure, untouchable, criminal. Any difference? That means समझे कि नहीं समझे? Sociology can find similarities between what appears to be different, जो दिखने में अलग लगता है, उसके बीच में समानताएं ढूंढ लेता है ये सब्जेक्ट. ओके. और हमको उस वजह से क्या हो जाता है, हमारे दिमाग में ये हो जाता है, अल्टीमेटली वापस कमिंग टू द सेम पॉइंट, कॉमन सेंस कोई क्वेश्चन हो गया हमारे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू अवर कॉमन सेंस वी थॉट बोथ आर डिफरेंट. ये तो गड़बड़ हो गई. अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ओके. अच्छा, वन मोर, लेट मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट दिस पॉइंट? Any doubt so far before I proceed? Online students? Any doubt so far? I think it's visible to you, right? Acha, no doubt. Fine. Acha, let me ask you few more questions with the same context. You tell me, there is a building called as, to be very specific, I'll give you example of religious organizations like Brahma Kumari. Do you know Brahma Kumaris?
Is there anyone who has not heard about Brahma Kumaris? Okay, fine. Do you know about, let me give some other example then. Do you know about Sadhguru? Everyone knows about Sadhguru? Okay, fine. Isha Foundation. You know, this is the name of the Isha Foundation. Fine. Second exam, second institution I'll write. I am going to compare two seemingly different institutions. And I'll have to be very politically correct here, क्योंकि नहीं तो फिर मुश्किलातों में आ जाती हैं हालातें. I'll compare Isha Foundation with day boarding school. Safe example है. Do you know what is day boarding school? Day boarding school, you know? Day boarding school का मतलब क्या होता है? जो वो पहाड़ों में नहीं होता, तारे जमीन पे था. ठीक है. पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ के आते हैं. पेरेंट्स यूजुअली get their kids enrolled in these schools where they would spend the next 5, 6 or even 10, 11 years without meeting parents sometimes, because this is a school where students would not come back to home from. This is a school where students stay also. It is a residential school. That is why it is called as day boarding. जैसे दून स्कूल इन देहरादून, मेयो इन क्या कहते हैं आपका अजमेर, मेयो इन अजमेर. हाँ, JNV ये कहाँ पे? नवोदय. अच्छा, यस, नवोदय, सेम. गुरुकुल, यस, वेरी नाइस. तो इसको कहते हैं डे बोर्डिंग स्कूल. नाउ यू नो व्हाट इज डे बोर्डिंग स्कूल, राइट? नाउ आई एम सेइंग दैट मेंबर्स हु आर जॉइनिंग ईशा फाउंडेशन, okay, as members of the institution and members of the school, I am saying there is no difference between the institutions. I'm not saying the members. Institutional, both are working on similar lines. Now see how. Let us understand how. Okay. Basically you have to have a third person eye here. आपको जो आप तक अभी तक सोचा है लाइफ में, आपको उसको हटा देना है. You have to think from a perspective of third person now. Think like this. Member joining Isha Foundation. Okay. First thing that he will have to do is he will have to stop using his mobile phone. Okay. He will have to stop wearing those clothes which he would usually wear in everyday life. वो boots, वो जेल लगाना, ठीक है, वो परफ्यूम डालना, ये सब बंद करना पड़ेगा. He will have to lead simple ordinary life. मानते हो? Fine. Student getting enrolled in day boarding school will also have to do the same. He will have to leave his mobile phone, wear specific kind of uniform, and uniform of all the members of day boarding and all the members of Isha Foundation would be similar. All members in the Isha Foundation would wear similar uniform. All members in day boarding would wear similar uniform. Fine. Third thing, all members who have joined Isha Foundation, after 6 months they would start speaking in very soft manner, soft tone, and very disciplined, and they would also appear very different, a haircut and all those things. Similarly, members in the day boarding school after 6 months would also start sounding very different, appearing very different. Regimented life, you know what is the meaning of regimented life? That means controlled, regulated life. The way we have in army barracks.
Okay, they will also have schedule. They will also have schedule. Okay, and we must also remember that they will also, the members of Isha Foundation would also sleep the way students in the day boarding would sleep, dormitories. So I as a person observed the two institutions and I found very much similarities between the two. That in both the institutions the members are looking very similar, uniformity is there, and both are staying there day and night. They cannot go outside very frequently. There are restrictions on them moving outside, and all of them have to look almost similar. They can't afford to look the way they like. They have to take off their material possessions, and they also have to follow the lifestyle every day, otherwise punishment would be given to them. I found very regimented life in both. Now let me add one more institution here. Now if I compare members of prison with members of day boarding school and members of Isha Foundation, I will not find difference very easily. See, from an outsider perspective, you will have to think that all the three are running on similar lines. All the members of prison will have same uniform. They will look similar. They will appear similar. They can't use mobile phone. They will have regimented life. They will have to sleep in same cells or dormitories, whatever it may be. Understanding my point? Now these are some of the institutions and most important thing, you will not find any of these in your city easily. इधर तो इससे इधर भी है बहुत फैसिलिटी. किनको? क्यों नहीं? अरे स्क्रीन पे सब चलता है, वहां तो टीवी में ही सब चलता है. यस, ये है. यहाँ तो मेंबर्स की बात आ गई ना कि मेंबर्स जान के खुद नहीं जा रहे हैं प्रिजन में, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन देखो तीनों इंस्टीट्यूशन का कैसे ऑपरेट, तो तीनों एक लाइन पे कर रहे हैं. वो मेंबर्स अलग हो गए, कोई अपनी मर्जी से जा रहा है, कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, ये अलग चीज है. लेकिन ऑपरेशन इंस्टीट्यूशन का तीनों का ऑलमोस्ट ऑन सेम लाइंस है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नाउ व्हाट डिड आई डू? बेसिकली आई डिड नॉट डू एनीथिंग. I simply put before you what we take for granted and tried to force you to think beyond that. This is what I did. I made you see for some similarities or familiarities in what appears to be different, so much so that you start struggling to find differences. आप समझ रहे हो? ओके. नाउ I was saying that all the three are not accessible easily in the city. मेरे को शॉपिंग मॉल रोज दिख जाता है, मुझे बुक स्टोर रोज दिखते हैं, मुझे मेट्रो रोज दिखती है, मुझे और क्या दिखता है रोज, बहुत कुछ, बहुत चीजें रोज दिखती हैं. मुझे ये रोज तो दिखता ही नहीं. इसको देखे हुए बहुत साल हो गए, दूर से, अंदर से क्यों यार, ठीक है, दूर से इसको देखे बहुत साल हो गए, इसको भी देखे बहुत साल हो गए, पता नहीं, इसको भी देखे बहुत साल हो गया. मतलब ये दिखते नहीं है. अब मेरा क्वेश्चन है, ये दिखते क्यों नहीं? ऐसा तो है नहीं सिर्फ मेरे को, आपको भी नहीं दिखे. क्यों क्यों क्यों? इन्हीं के लिए पीसफुल क्यों चाहिए एनवायरनमेंट? हमको नहीं चाहिए पीस, पीस तो हमें चाहिए. क्यों रखा जाता है इनको दूर? हाँ 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 हाँ. समाज का जो वे ऑफ लिविंग है, वैसा वे ऑफ लिविंग इनके अंदर के लोगों का नहीं हो सकता है, इसलिए इनको अलग रखा जाता है, राइट? और जो इनके जैसा बन जाता है वो भी अलग हो जाता है. तो क्योंकि द मेंबर्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस
start adopting different lifestyle. When you will meet any one of them, you will also find many differences between your thinking and their thinking. Okay. That is why they are not found in the city. They are always found in the corners of city. And this corner position of these institutions in the city reflects cornered mindset. Okay, the mindsets which are not seen as normal ones. I'm not saying abnormal or criminal, but normal. Nahi hai ye minds. See, these are different minds. Okay. So अर्बन प्लानिंग में भी माइंडसेट की प्लानिंग दिखती है हमें, किसको कहां प्लेस करना होगा. आर यू ट्राइंग टू गेट माई पॉइंट? ओके, अच्छा, फाइन. नाउ बेसिकली व्हाट आई डिड, आई जस्ट आस्क्ड यू टू फाइंड सिमिलैरिटीज बिटवीन different institutions. Okay, fine. Now and one more similarity if I tell you between all these. In all the three there would be CCTVs, surveillance. In all the three, surveillance is there. Surveillance to ensure that nobody is breaking the discipline of the institution. Okay. So there are many similarities on all of them. Fine. So now this is what sociology is all about. It is helping you question what we take for granted. Okay. And in our syllabus, I will tell you, in our syllabus, we have two divisions, paper 1, paper 2. Okay, paper 1 carries 250 marks and so is the case with paper 2. Okay. Now what is best thing about sociology and essay is that in both the papers you will have choice, but in GS papers you will not have any choice. You will have to write all the questions in GS, but in socio and essay you will have to choose which questions you will write, right? Now on the one hand you have GS 1, 2, 3 and 4. Okay. Here you don't have choice. On the other hand you have essay plus sociology consisting of 2 papers. Here you have choice. Okay. Now it is observed that most of the students who are clearing the examination are the ones who are doing good in their choice. Okay. Because जिस जगह आपको चॉइस ही नहीं दी गई वहां ऑलमोस्ट सब बराबर हो जाते हैं. आपका अपना साइड कब बाहर निकल के आता है? जब आपको चॉइस दी जाए. Your own side will only come out when choice is given to you. If there is no choice given to you, then all of you are same, right? And choice is given to you in only 2 subjects where you can stand out and prove yourself to be different from others. And those choices are given in only sociology and essay. So that means here are those subjects where we are given choices and we can prove to be different. ये चले गया क्या? ये रहा. So what does it mean? That you have to give your best in optional to score best
and to get the best rank. We know very well as an optional it carries 500 marks, which is more than any of the subject. And what you get in this 500, that sometimes students get in 3 GS paper combined. ये मैं आपको बता दूं, एक ऑप्शनल जो दे सकता है ना, कई बार वो 3 जीएस के पेपर नहीं दे पाते. और ये भी हमारे लिए समझना जरूरी है क्योंकि वी आर गोइंग टू बिगिन दिस सब्जेक्ट. वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम डू वी गिव टू जीएस एंड हाउ मच टाइम डू वी give to optional. Usually it is observed and found that students spend most of their time in GS. Most of the students usually spend most of their time in GS, and very few students spend most of their time in optional and essays. We know selection rate is inclined towards very few ones. Understanding my point? Those who are selected, you will always see they are always known by their optionals. They are never known by their GS marks. They are always known by their optionals. So what does it mean? That you have to give your best in this subject, and you don't have to worry about any other subject when you are reading this subject. And जितना आप इस सब्जेक्ट को दोगे उतना ये सब्जेक्ट आपको देगा, उससे ज्यादा देगा. ओके. एंड हमारा टारगेट है एज यू नो मार्च के एंड तक कंप्लीट करना है विथ PYQs. सो ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अदर देन our course completion, what exactly are we going to do till March end? Our target, as I told you initially also, March end would be there definitely, but PYQs, test series would be incorporated in your program. That means all of you will have to write tests, which is compulsory for all of you. सबको compulsory है ये. और जितने भी लोग टेस्ट देते हैं उन सब को I can easily point out names from my previous batches जिन्होंने अपने fear को, जो आंसर राइटिंग का fear है, उसको ओवरकम किया है. आपको यकीन नहीं होगा जानकर कि हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत है, उसमें शक नहीं है और मजा भी बहुत आता है. बट द ओनली थिंग दैट वी आर अफ्रेड ऑफ इज राइटिंग. दिस इज द ओनली थिंग जो हमें को डराता है बहुत ज्यादा. यू कैन गिव अस एनीथिंग दैट क्या कहते हैं, यू वांट अस टू रीड, वी कैन रीड मेनी थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, सर समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करें, पहला वर्ड क्या लिखना ये नहीं पता चल रहा है. अब ये जो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, द डिफरेंस बिटवीन दोज हु आर सेलेक्टेड एंड दोज हु आर नॉट इज ओनली those who selected were writing, those who were not selected were not writing, they were only reading. इसका मतलब हम चाहे जितना पढ़ ले सेलेक्ट नहीं हो सकते जब तक हम लिखेंगे नहीं. तो टेस्ट सीरीज, ये वही टेस्ट सीरीज है जिसके लिए आप अलग से 10,000 रुपए दोगे कहीं मार्केट में. तो ये हमारा पार्ट है कोर्स का, इसको आपने रिलीजियसली देना है. ओके. एंड इसीलिए आप सबको रेगुलर होना पड़ेगा. ऑल ऑफ यू will have to be very disciplined, we will have to be very regular, and आप सब मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप लोग अपने तैयारी में कभी भी in any subject you will not read multiple sources. ठीक है? Why I am saying this?
अच्छा, why would people say don't read multiple sources? खराब क्या मल्टीपल सोर्स पढ़ने, मुझे समझ नहीं आता क्या खराब है? अच्छा, so he is saying that reading one book 10 times is more beneficial than reading 10 books one time. Okay, okay, you have made actually very nice point, but I will ask you a question like a student. I'm a student. Okay, suppose you are a teacher, so I would like to ask you, all the things are not found in one book, then yes, okay, and what about those things which are not there in this book? वेरी नाइस। ये बंदा टिका रहा अपनी बात पे। देखो मेन चीज ये है, इसने अपना जवाब नहीं बदला, इसने अपना जवाब नहीं बदला। जवाब इसका फिक्स है, एक ही किताब को 10 बार पढ़ेंगे, और अगर कुछ मिल गया जो उस किताब में नहीं है, उसको गूगल करके उस किताब में डाल दिया। उसके लिए किताब क्यों चेंज करना? यही मैं चाहता हूं आप करो। यू, ऑल ऑफ यू शुड रीड वन बुक 10 टाइम्स। लाइक फॉर पॉलिटी, यू गाइज आर रीडिंग लक्ष्मीकांत आई गेस, है ना, एंड यू आर रीडिंग इट 10 और 20 टाइम्स। हो सकता है उससे ज्यादा बार पढ़ लो, 5 बार तो शायद प्री के पहले ही पढ़ लोगे आप उसी महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तभी जाके तो पॉलिटी आती है, क्योंकि ये किताब को कई बार पढ़ा है। क्या नहीं आता? क्या नहीं आता है? कौन सा सब्जेक्ट उतना कंफर्टेबल नहीं लगता हमें जितना पॉलिटी लगता है? एक, हाँ, हिस्ट्री। क्यों? दिक्कत सबसे बड़ी ये भी तो है कि हिस्ट्री के लिए हम किताबें कोई एक नहीं पढ़ रहे, और अगर पढ़ भी रहे हैं तो हम PYQs नहीं देख रहे। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। किताब एक ही पढ़नी है, जो दूसरी किताब होगी ना उसका नाम होगा PYQ। वो जो सेकंड बुक है ना, सेकंड बुक विल एक्चुअली बी लाइक योर एडवाइजर। फर्स्ट बुक इज लाइक प्राइम मिनिस्टर, सेकंड बुक इज लाइक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। थिंक इट लाइक दिस। कल को आप ऑफिसर बनोगे, आपके अंडर भी कुछ लोग होंगे जो आपको एडवाइस देंगे। ठीक है, पियोन होंगे आपके, क्लर्क होंगे आपके, नीचे वाले जो सेक्शनल ऑफिसर्स होंगे वो भी एडवाइजर्स का ही रोल प्ले करते हैं। सो आपको क्या करना है, आप ज्यादा एडवाइस लेते हो जब लोगों से, तो क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, एंड यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, यू बिकम इनडिसाइसिव, एंड फिर रेड टेपिज्म आ जाता है ब्यूरोक्रेसी में, डिसीजन डिले हो जाते हैं, क्योंकि 10 लोगों ने एडवाइस दी, समझ नहीं आ रहा कौन सी अच्छी है इसमें से, ये चूज करने में मुझे 1 महीना चाहिए, और उस 1 महीने में और 10 मिल गई एडवाइस, और काम खराब। तो टाइम अगर बढ़ा लिया हमने डिसीजन लेने का, उस टाइम में और डिसीजन हमारा मुश्किल में पड़ गया, बिकॉज वी केम अक्रॉस मेनी अदर एडवाइसेस गिवन बाय अदर पीपल। इसका मतलब क्या है? डिसीजन डिलेड कैन ऑल्सो कॉज डिसीजन टू गेट मोर एंड मोर डिलेड। इसका मतलब डिले इज कंप्लीटली हार्मफुल टू अस, एंड मल्टीपल सोर्सेज आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग द डिले। तो मल्टीपल सोर्स को ही खत्म कर दो। इसीलिए यू विल सी most of the people who get selected, you will always notice one thing. They will always talk about limited sources, multiple revision. And you will always notice one more thing among the selected people. All of them have their own notes. आपने नोटिस किया कभी ये चीज? सब सेलेक्टेड लोग के अपने नोट्स होते हैं, और हम कभी अभी क्या करते हैं, हम उनके नोट्स मांगते हैं कि नोट्स दे दो अपने, एंड वी स्टार्ट अज्यूमिंग कि यही हमारे नोट्स हो गए। अब ये करते हैं कि नहीं? Generally we start doing this, that we borrow their notes and we start thinking our preparation is complete now because we have toppers notes. But if topper was also thinking like this, that they should also borrow toppers notes, तो फिर तो यानी कि हर टॉपर के पास जो सबसे पहला एस्पिरेंट जिसने क्लियर किया था UPSC, उसके नोट्स होने चाहिए थे, बट वो है नहीं है। सबके पास अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हर साल अपडेट हो रहे हैं। अपडेट क्या हो रहे हैं?
आप ही लोग एंट्री कर रहे हो और आप अपने नोट्स दे रहे हो आगे जनरेशन को, यानी आप जो अपने नोट्स बना रहे हो आपकी सक्सेस उससे हो रही है. इवेंचुअली यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स and then only you can reproduce them. जब तक आपके हाथ से लिखा नहीं होगा कोई चीज, तब तक आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे. जब हम लिखते हैं ना, हम पढ़ते टाइम इतना सोचते नहीं, लिखते टाइम एकदम नहीं ये क्या लिख रहे हैं, लिखते टाइम एकदम हमारा ना सेंस अलग खुलता है, ये क्या. तो तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आई नीड टू शॉर्ट इट, आई नीड टू शॉर्टन इट. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है that in our class handouts I will definitely give, but and also I will also give you dictation, but most of our time would be spent on discussions. Okay, plus discussions. Now how will you manage things? I will tell you when to write, what to write. You don't have to worry about writing everything. I will strictly advise students not to write everything that I speak, because usually it happens that sometimes student end up writing everything spoken by teacher. उससे क्या हो जाता है, प्रॉब्लम कल को स्टूडेंट के लिए हो जाती है. ही इज नॉट एबल टू शॉर्टन थिंग्स, क्योंकि सुनने में तो उस टाइम सब अच्छा लगा और मजा आया और सब कुछ नोट कर लिया. अब जब जिस दिन टेस्ट देने गए ना, टेस्ट देने कहाँ गया वो टेस्ट, ऊपर था शायद. द डे यू डिसाइडेड टू गिव टेस्ट, दैट डे यू गॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज you realize you have so many registers now. इसीलिए when it comes to making your class notes, I will strictly advise you to only bother about this thing and few things which I will tell you in between, and handout is something that you can go through for the same discussion that we have done. The difference is that in the handouts that I will give to you, the language would be bit sophisticated one, but in the classroom the language that we will be using will be very simple. It will make things very easy for you, so much so that you will start thinking कि छोड़ो यार हैंडआउट को पढ़ते ही नहीं. You will not even bother about reading handout, and this happens that usually I give handouts and student like them also, but students start relying only on the classes, because in the classes we have done things comprehensively PYQs के साथ. तो इसलिए students don't bother about going through handouts also separately. So that means हमको एक ही चीज करनी होगी. क्या करना होगा? हमें अपने क्लास के नोट्स पढ़ने होंगे और कुछ नहीं पढ़ना होगा. Coming back to the same point, one notes, multiple times reading, and this multiple times reading will automatically happen with you. Why? Because I will ask you to write tests after every 2 weeks or 3 weeks. This will actually force you to read the same thing multiple times. You will go through that cycle. Okay, and before making you go through PYQs, we will also organize in our classes, we will also conduct quiz sessions. This will happen before every test. This quiz session will actually consist of MCQs in sociology, multiple choice questions. Okay, अब MCQs in sociology का क्या रेलेवेंस है? बहुत बड़ा रेलेवेंस है. आप एक चीज नोटिस करना, आपने एक चीज शायद नोटिस करी है कि नहीं पता नहीं मुझे. Whenever you have given test of polity or economy, you have realized that you have learned more after writing the test.
Before appearing for the test, you thought you knew. When you appeared, you came to know. अच्छा हाँ ऐसे नहीं सोचा था, अरे यार ये गलती कर दी, अच्छा उसका ध्यान देना था, अच्छा ये था। वो अच्छा वाला मोमेंट जो है ना, अच्छा उसने आपको सिखाया, भले वो एक कॉस्ट पे सिखाया, कॉस्ट पे सिखाया। कॉस्ट क्या थी कि आपके मार्क्स कट गए, कोई बात नहीं, यहीं कटे हैं ना, उधर तो नहीं, यहां जितने कटवाने कटवा लो, बट आखिर में वो अच्छा वाला मूवमेंट के साथ अगर कटवा रहे हो तो फायदा हुआ। ओके और वो अच्छा वाला मूवमेंट से क्या होएगा, यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया है ना, यू विल नेवर फॉरगेट दैट। आपने उधर तो गलत कर दिया, बाहर आते ही जब आपको रियलाइज हुआ ये गलत आंसर है, अब आपको याद रहेगा कम से कम 2 महीने तक, उसकी वैलिडिटी होती है, देखना चेक करना आप उस चीज की। आप जो भी गलत करते हो वो याद रह जाता है हमेशा। गलत जो आपने सही किया है वो शायद याद ना रहे, पर जो गलत किया ना इधर लगता है, वो याद रहेगा 2 महीने तक। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी है कम से कम, आई वुड से अप्रैल तक टेस्ट सीरीज लगाना, चाहे घर से चाहे मार्केट से खरीद के, प्रीलिम्स की कह रहा हूं मैं। ओके क्योंकि अप्रैल का सीखा हुआ जून तक रहेगा, वो जून तक रहेगा, उसको आप नहीं भूलने वाले। ये मत सोचना कि मई के लास्ट तक टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जितना करना है अप्रैल तक कर लेना है, उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। उसके बाद बस आपको अपने लिए सब लोगों से बातें अवॉइड करके अपने लिए बस पढ़ना है आराम से। कंपटीशन कंपटीशन आपको सिर्फ मार्च अप्रैल तक करना है लोगों के साथ, और मई ऑनवर्ड, मई पूरा आपका है, उसमें कोई कंपटीशन, उसमें सिर्फ पीस है। मई में 26 को आपने एग्जाम देना है। ओके सो क्विज सेशन का फायदा ये होता है दैट क्विज इन सोशियोलॉजी विल हेल्प यू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स द वे यू रिटेन देम व्हेन यू डू क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। आखिर में उसका फायदा ये होता है कि रिटेन हो जाता है, तो वही रिटेन के लिए हम सोशो में भी PYQs कराते हैं और MCQs कराते हैं भाई। ठीक है सो टुमारो आई विल बिगिन विद आवर फर्स्ट क्लास यूनिट 1 and what are we going to study in unit 1? We should know about that also. First of all, we should know what is the origin of this subject. This is what unit 1 is all about. How sociology came into this world. Why this subject exists. ये सब्जेक्ट है ही क्यों इस दुनिया में? ओके यूनिट 1 why sociology? Came into existence. Okay. For this, we will have to read only 2 things majorly. One is Renaissance, and second is Enlightenment. And Enlightenment आप लोगों ने पढ़ा है? Does any one of you remember what is Enlightenment? Gain of knowledge. Sudden realization. Okay. But almost very close. मतलब, but I'm not talking about the meaning of this word, literal meaning. I'm talking about the phase of enlightenment in Europe. Okay. What was so special about that phase, that this phase was called as enlightenment phase? Very nice. Rise of scientific temperament. Rise of scientific temperament. Scientific temperament का मतलब क्या होता है? What is the meaning of scientific temperament? Finding logic, reasoning. Very nice. कि सवाल करना चीजों को, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों। ओके आपको ध्यान होगा, the first thing that we did in the class was
रीजनिंग ओनली, ये क्यों क्राइम है, ये नहीं. I made you think on those things. This is crime, this is not crime. The same act in some other condition is not crime. Here it is crime. So we were actually reasoning out. We were thinking. We were applying our mindsets. So enlightenment phase in Europe is that phase where some people applied their mind and questioned the church, questioned the king rule. कि ऐसे कैसे तुम रूल करोगे, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कब तक करोगे. King said, I will rule over you because God has told me to rule over you. So people said, दिखाओ, लिखा हुआ दिखाओ हमें, कहाँ God ने तुमको बोला है. So people started actually questioning the king. And they said, we don't believe in divine will or divine approval because it is not, testable. It is not scientifically valid. So when the phase when people started questioning king's rule on the basis of God's will, that phase was called as enlightenment phase. People are using scientific temper to question the given knowledge. कभी चर्च बोलता था that our earth is flat. Imagine if people had not questioned the church. तो आज तक हमें यही लगता कि अर्थ फ्लैट है. Somebody dared to question, only then we got knowledge which is objective. So that means questioning के बिना, सवाल खड़े किए बिना जवाब नहीं मिलता. इससे समझ ये आता है हमें कि सवाल खड़ा करना इज इंपॉर्टेंट, तभी जवाब मिलता है. और सोशियोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो सवाल खड़े करने में मदद करेगा. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. ओके. सो we will understand what our society is like. We will become friends with society. Society पहली बार हमारी दोस्त बनेगी. अभी तक सोसाइटी ऐसा लगता है कोई है ये इधर कहीं, लेकिन इस सब्जेक्ट के बाद सोसाइटी आपकी दोस्त हो जाएगी, फ्रेंड लिस्ट में आ जाएगी आपके. आप उसको जानना शुरू करोगे, उससे चैट करोगे रोज. ठीक है, फिर आपको जवाब मिलेंगे अलग अलग. ओके, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो. इफ यू हैव एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you can ask me. Tomorrow same time 11 a.m. we'll start unit 1. Don't refer anything. Why? See, all of us are selfish, right? हम सब चाहते हैं हमारा अच्छा हो. मैं भी तो ये चाहूंगा कि मेरा अच्छा हो सब कुछ. ठीक है, हम सब सेल्फिश होते हैं इस दुनिया में. तो मैं आपको क्यों रोकूंगा ज्यादा बुक्स पढ़ने से? तभी रोकूंगा जब मुझे पता है कि ज्यादा बुक्स पढ़ने से नुकसान ही होगा. और मैं तो चाहता हूं रिजल्ट आए. आप चाहोगे रिजल्ट जितना ना, उतना ही मैं भी चाहता हूं रिजल्ट आए. जितना रिजल्ट आने में आपका फायदा, उतना ही मेरा फायदा आपका रिजल्ट आने में. ठीक है, तो फिर मैं तो कभी भी आपको वो चीजें पढ़ने से नहीं रोकने वाला हूं जिससे रिजल्ट आ सकता है. मैं वो ही चीज रोकूंगा जिसमें रिजल्ट रुक जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, आंसर डज नॉट लाई इन विच बुक टू रीड. आंसर लाइज इन हाउ मेनी टाइम्स टू रीड the same. Because if I tell you read 1, ignore 10, now does not mean those 10 are not useful. 10 are also useful, but all the 10 are not useful. Out of those 10, some person may be reading one of them, and for him these others are 10. So you have to choose that one from your 10. Everyone will have their one of 10s. And everybody will get selected if they read only one. But the moment they start reading all the 10 गए, आपको अपना वन चूज करना है उन 10 में से. मैं ये कह रहा हूं बस. ठीक है, सो आई विल सी यू गाइस टुमारो. ओके.